हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्केचिंग चैलेंज डे 15 विद चारकोल ड्राइंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए दोस्तों एक बार फिर से हम नज़र डाल लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में दोस्तों हमने ये ड्राइंग बनाई थी और आज हम शुरू करते हैं नई ड्राइंग विद चारकोल पेंसिल। तो सबसे पहले काम दोस्तों आपको जो करना है वो फिगर ड्राइंग अपनी जो आपको अटैम्प्ट करनी है उसको आप नॉर्मल अपनी पेंसिल से बनाना शुरू कर दीजिए। आप चाहें तो HB पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जो दोस्तों पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो है 6B। तो 6B की हेल्प से जैसा कि दोस्तों हम हमेशा अपना काम करते हैं वो सारा काम हम यहाँ पर जो है करते हुए आएंगे और अपना अटैम्प्ट करेंगे पूरी ओवरऑल फिगर ड्राइंग को और जो एनवायरनमेंट हमें वहाँ पर देना है उन सब को। तो यानी कि नॉर्मल पेंसिल की हेल्प से पहले हम जो काम करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आपको चारकोल पेंसिल यूज़ करनी है ग्रेफाइट के ऊपर तो ग्रेफाइट को थोड़ा सा हल्का चलाना पड़ता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि ग्रेफाइट और चारकोल दोस्तों एक दूसरे के ऊपर बड़े अजीब व गरीब तरीके से चलते हैं, मर्ज नहीं हो पाते हैं एक दूसरे के साथ और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आपको फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हम अपने जो फिगर ड्राइंग है उसको डायरेक्टली यहाँ पर अटैम्प्ट कर रहे हैं। आई होप दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्किल आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होगा। जो दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो समझ सकते हैं कि स्टिक ड्राइंग की हेल्प से भी एंड डायरेक्ट आप जो है किस तरीके से चीज़ों को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे हम जो है इसमें बाकी सब चीज़ों को इस तरीके से थोड़ा सा मैं डार्क अगर शो करूँ तो आप आई होप आपको अच्छे से जो है चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एंड अब इसमें धीरे धीरे जो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें ऐड करनी है वो सारी चीज़ें ऐड करते हुए चलते हैं। बढ़ाते रहेंगे और चीज़ों को अटैम्प्ट करते रहेंगे, देखेंगे कि किस तरीके का चेंज हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये देखिए हमें जो है धीरे धीरे अपना जो शेड है, आप ये देखेंगे कि चारकोल में और ग्रेफाइट में किस तरीके का कंट्रास्ट लेवल आपको नज़र आता है। कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा अगर आपको चारकोल फिगर ड्राइंग ज़्यादा अच्छी लगती है या कंपैरिजन ग्रेफाइट के या कलर पेंसिल के। हमने अभी तक जितने भी अपनी फिगर ड्राइंग अटैम्प्ट की है, क्या चारकोल ड्राइंग उससे अलग है या किस तरीके की आपको ये फीलिंग दे रही है। तो कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे। हमेशा दोस्तों अपना प्यार बनाए रखिए ताकि मैं आगे भी इसी तरीके की वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके का डार्क कंट्रास्ट जो है यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। आई होप दोस्तों पेंसिल में ये चीज़ देखिए आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। एंड आप समझ सकते हैं कि जब आप एक डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम यूज़ करते हैं अपनी सेम ड्राइंग के लिए तो दोस्तों बड़ा यूनिक और सेटिस्फाइंग होता है। आप दोस्तों मानेंगे नहीं बट ये बहुत फैक्ट है कि आप जब एक ही फिगर ड्राइंग को कलर पेंसिल, वाटर कलर, पेन ड्राइंग और अब हमने पेंसिल और अब ये चारकोल इतने सारे मीडियम्स के साथ अटैम्प्ट किया है तो बड़ा ही मज़ा दोस्तों मुझे तो देखिए पर्सनली आता है। मैं आपको अगर सच्चाई बताऊं तो
और मैं आपको इसलिए रिकमेंड और मोटिवेट करता रहता हूँ चीज़ों को लेकर कि आप भी डेली बेसिस पे जो है डेली बेसिस पे भी ना सही तो आप कम से कम डिफरेंट मीडियम्स जो है ट्राई करें हमेशा अपने ड्राइंग में, ताकि आप लोग डिफरेंट चीज़ें अटैम्प्ट करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल और अपनी क्रिएटिविटी स्किल को बढ़ा सकें। तो ये देखिए इस तरीके से हम जो है धीरे धीरे इसमें जो फोल्ड्स है एंड जो लाइंस डार्क है, तो मीडियम और लाइट शेड्स को देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर अटैम्प्ट करते हुए चलेंगे। told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. चारकोल की फिगर ड्राइंग को यहाँ पर कंप्लीट लगभग जो है दोस्तों कर लिया है। एंड आई होप दोस्तों ये आपको डिफरेंट और यूनिक ज़रूर लगी होगी। एंड किस तरीके का ओवरऑल ये एक्सपीरियंस आपको जो है लगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड चारकोल ड्राइंग को भी दोस्तों मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको चारकोल कैसा लगा, क्योंकि डार्क पेंसिल से दोस्तों अटैम्प्ट करने पे वाकई में ही एक डिफरेंट जो है फील आता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे पास यहाँ की कंपोजिशन रेडी हो चुकी है और इसमें अब मैं जो थोड़ा सा एक बारिश वाला जो इफेक्ट है दोस्तों वो यहाँ पर डालने के लिए इस तरीके से दोस्तों स्लांट लाइंस को यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि एक थोड़ा सा वो ये ना रिदम जो है आपकी कंपोजिशन में आ जाता है। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारे यहाँ पर बूंदें बन चुकी हैं और हमारी ओवरऑल जो फिगर ड्राइंग है वो यहाँ पर कंप्लीट दोस्तों हो चुकी है। सो आई होप दोस्तों आपको ये चारकोल फिगर ड्राइंग अच्छी लगी हो दोस्तों वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।